अमित जी, आपका माइक ऑन है, म्यूट कीजिए। Good morning, dear participant. Morning, sir. Good morning, Good sir. morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning, sir. Good 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 morning, sir. Participants, the topic Good morning, sir. well, I would like to thank Good morning, sir. for selecting this topic. Good morning, sir. This is the director of this program, Dr. Faiza Basi ma'am. And secondly, I would like to thanks for giving me opportunity to Professor Sari Jamal Saab to speak on this topic, that is inclusive education, and with special reference to that is inclusion of differently abled person and NEP 2020. Basically, this topic talks about what the NEP says about the inclusion of differently abled person. Dear participants, as ignorance is a guarantee of marginalization. As we know that it is quoted by Levin 2000. As far as the global scenario is concerned, you will see here 1 billion people, or more than about 15% of world population, experience some form of disability and prevalence in higher. Nearly 2/3 of individuals with disability live in developing countries and sustain themselves with less than $1 per day. This is what the global scenario. You will find also the person with disabilities are more likely to experience adverse socioeconomic outcomes such as less education, poor health, or outcomes, lower level of employment, and higher poverty rates as compared to the general population, or you can say the normal people. And this is really remarkable and very empathetic for the people who are normal. COVID-19 continues to have a wide-reaching impact across the globe, which impacted not only to these people, but in general population, that we as a human being affected all people. It is important to note how persons with disability are impacted by the pandemic. If we had impacted in so gravely and so pathetically that if because of the COVID-19, just imagine what about those who are one of pandemic पूरा पैर ही नहीं रखा 98 students with disabilities. अपना कपड़ा उतार लो, आओ उतार दे इधर। श्रेष्ठा संध्या जी का माइक। ए एक हाथ पलटे ना। महीना बाद देखा हो दो दांत निकल चुका है, दो और बाकी। संध्या मैम यहाँ सब निकल गया। Okay, no worries. She's out. No worries. People with disability face barrier in accessing service like health services, education, employment, and transport, among the others. People with disabilities are more likely to be unemployed than non-disabled people. In Organization of Economic Cooperation and Development countries, the employment rate is of disabled people are about 44%. That is what I discussed with you. That was the global scenario of as far as the disabled population is concerned. Now you will see this Indian scenario. India needs growth, but more importantly, it needs inclusive growth, meaning thereby that they always try to bring all type of people together as far as developmental activities are concerned. No Indian should be left behind. This means education for all, whether it is higher education, research, innovation, or that creates products and services which are affordable for all people. India has the second largest education system in the world, with 200 million children aged between 6 to 14, around 10 million out of school. This is one of the data reported by the World Bank in 2004. However, bearing in mind the apparently only 35% of children are registered at birth. That is reported by UNICEF 2004. Others estimate that between 35 to 80 million out of school children. This is a study conducted by the
single in 2005-8. Another report by which is very popular, that is Census 2011, an authentic data as far as Indian data is concerned. You will find that Census in 2011 report that the finding of a 2.2% disabled population, or if you want to see number that are there, the 2,19,06,769 are challenged by NGO. This data what the census has reported, but the same data has been challenged by the different NGOs after the studies conducted by the different national and international NGOs, and they claim that no, this data and this population of disability is not 2.2%, but it's closer to the 6%. Meaning thereby, it is not, that is the data which has been declared by the government of India through census is somewhere lying between 4 to 6%, as Thomas 2005A and Thomas 2005B reported in his study. This, what I want to convey you, that the disability is measured on 5 categories in India, or you can say the categories of disabilities in India, that is sight, which we know visually challenged, speech, dumb, who cannot speak properly, hearing, that who cannot hear properly, that is deaf, and locomotor, those we call them orthopedically challenged. Mental retardation, which exclude disabilities such as autism, etc. These are the 5 categories of disabled population in India. Now, if you will see, you will find that in addition, a person has to be medically certified as having 40% or more of one of these disabilities in order to be counted and so qualified to request benefit of disability. Whatever we have, or whatever the authority which issues the certificate of disability, they especially check whether the person who is suffering from any kind of disability, that must be more than 40%. According to the National Sample Survey 2002, only 45% of the disabled populations is literate and 9% has secondary level education or higher level. Among children aged 0 to 19 years, 1.7% have a disability. Furthermore, the boys 1.81% and the girls 1.58% in India have the disability across the age group. Now, if you will see, as far as the distribution of disabled population or differently abled population is concerned, disabled population percentage as far as the 5 to 19 year age area wise, if you concern, or you can say the domicile wise, you will find the population in rural areas is more as compared to the urban areas. In rural areas, the population is 71%, while in urban areas, the population is 29% only. So again, this is reported by the Census Survey of India 2011. Again, what this reflects, that the population is more in rural areas, where that is contradictory, where there is the less facilities and amenities are found, while in urban areas where the facilities are quite better as compared to the rural areas, the population of disabled persons are less. So this again, you can say that still, as far as the area-wise population of disabled is concerned, they have more suffering in the urban area, rural areas as compared to the urban area. If you see the distribution of disabled, differently abled person in India and state union territories, that you will find at all India level, disabled population, disabled person constitute, as I told you earlier, 2.21%. In 15 states and union territories, the prevalence of disability, population of disabled person or total population is higher than all India level. That is, they are higher in 2.21%. Let's see, among the state and union territories, Sikkim has the highest prevalence of disability, that is 2.98%. About 3% of the total population of Sikkim. And one thing I would also like to highlight here, that Sikkim is having the very different kind of physiographical condition rest of India. That is, the Sikkim have the rough topographical conditions, they have undulating topography. The plain region is
very negligible. So the people who are suffering from one or other type of disability, they might be suffering and facing the more challenges over there. And the summit, another data what shows that the Damandeep, that is Union Territory, constitute or reported the lowest prevalence of disability population, that is 0.9%. That is around 1%. So this is one contradictory, or you can say the paradoxical uh, data which shows that the state which is having a very rough topography have the maximum number of population of disabled person. This is what we will discuss later on. All India, you will find that the highest number of disabled person the highest, if you will see that the highest number of disabled person, slide change nahi ho raha hai, 1 minute. The highest number of disabled persons is from the state of Uttar Pradesh. Nearly 50% of the disabled persons belong to the one of the 5 states. That is, if you will see the data, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये slide change नहीं हो रहा है. 1 minute. फिर से सर शेयर कर लीजिए, फिर से एक बार डिस्कनेक्ट कर, फिर से शेयर कर लीजिए दोबारा. सर आवाज नहीं आ रही. 1 minute में slide share नहीं हो रहा था. 1 minute, please wait. थैंक यू सर, हम सोचे हम ही को सुनाई नहीं दे रहा.
अब दिख रहा है सर स्लाइड. Okay, thank you. Sorry for your inconvenience, participant. Basically network ही चला गया था, इसलिए problem है. The highest number, what we are discussing earlier, the slides that were the distribution. Now this is the highest number of disabled persons is from the state of Uttar Pradesh. Nearly 50% of the disabled persons belong to one of the 5 states. Again, you will see that Uttar Pradesh constitutes 15.5%, Maharashtra 11.05%, and Bihar 6.69%, Andhra Pradesh 8.45%. The last, that is West Bengal, that is 7.52%. And in these 5 categories, you will find that at all India level, 7.62% of the disabled population of person belong to the age group of 0 to 6 years. Bihar, in this category, Bihar has the highest population. Meghalaya 11.41%, Kerala 3.4%, 44%, and again the state of Uttar Pradesh is home of the highest number of disabled children in this category, that is 0 to 6%. And then 4 states, namely Uttar Pradesh 20.31%, 14.24%, and similarly you can see very easily the data over here, and together they have the burden of more than 50% of the total disabled population of India. India is, as we know, that one of the few countries world over where the education of children with special needs does not fall within the purview of Human Resource Development Ministry. My dear participant, basically here I would like to highlight, keeping all the data which has been reported by the census which is published by Government of India, keeping all this information as far as the Indian scenario is concerned, we are not considering these disabled population as a human resource, and they are not come under the purview of the Human Resource Development Ministry. Yes, they have been given another ministry, that is, the Social Justice and Empowerment. So why we are not considering them, and why we are not bringing them in the purview of Human Resource Development Ministry? Are they not sufficient to contribute in our economy? They are so disabled that they cannot contribute in our economy? The prime focus of which is rehabilitation, not education. We always try to rehabilitate them. We try to give them a place. We try to give them a isolated area so that they can live there. We don't try to bring in the mainstream, which is quite, I will say, against the philosophy of inclusion and inclusive education. India estimated 40 million children in the age of 4 to 6 years with physical and mental disabilities are being excluded from the mainstream of education. And you will find, according to Census 2011, that is updated in 2016, in India, out of 121 crore population, that is 2.68 crore persons are disabled, which is 2.21%. Of total population. Among the disabled population, 56%, and this is what 1.8 crore are female and 1.5 crore are male. Majority of the disabled population resides in rural areas, which I have already told you. And next important aspect is that about this percentage and the less percent of residing in the urban areas. About 80% of Indian population lives in rural areas and without provision of special schools and facilities. Next, you will find that an estimate shows that 8 million children out of school in India, that is MHRD 2000 now reported in statistics, many of whom are marginalized by the dimensions such as poverty, gender, disability, and caste. These are also the one of aspects of the inclusiveness, and they are marginalized on that basis. But here, if we see the quote quoted by the Emma Thompson, he says that being disabled should not mean being disqualified from having access to every aspect of life. If someone is have the disability, it doesn't mean that he is disqualified. He cannot do anything. If it is so, then we or those people who are using the spec and we cannot see properly, we are also disqualified because we have the disability.
We cannot see properly without the help of this specs. So keeping in mind that if a person is blind, it doesn't mean he cannot speak properly. He cannot contribute anything properly. If a person cannot walk properly, it doesn't mean that he cannot think properly. So सिर्फ एक कोई उसके पास कोई एक डिसेबिलिटी है, उसके बिना पे हम उसको डिस्क्वालीफाई कर दें, I think this is the curtail of human rights of that particular person. Now the question arises, what are the needs and challenges for equity and inclusion of these differently abled person? The first question which comes in my mind, keeping all these discussions and deliberation before you. The second question, how will an inclusive environment meet the needs of differently abled person? And the third question, how quality education can be effectively and efficiently delivered for differently abled person or disabled person? These are the three questions, and we will try to know the reason, cause, and solutions, and what we can do, being a teacher, faculty member of different institutes, what we can do to solve these issues, to answer the question, the answer of these questions. Dear participants, this can only be possible through inclusive process or inclusive education. We can solve these issues if we adopt the philosophy of inclusion in our classroom, in our institution, in our college, in our universities. Then we can, because this is not any kind of new phenomenon. ऐसा नहीं कि आज की कोई उपज है, आज का कोई evolution है कि हम ऐसे बच्चों को देख रहे हैं, ऐसे बच्चों को हम अपने सोसाइटी में पा रहे हैं. This is a historical phenomenon, and for that purpose, I have tried to find out what are the process of inclusion and historical perspective. There are a few eras which these people have crossed and come to this stage. I mean, this today's stage. At this stage, how they are being treated and how they have been treated and they have been treated in the past. And I have divided and trying to put before you these 7 eras of their inclusive process, of their process of inclusion. The first era, which I named that era of exclusion, that is era of exclamation and abandonment. ये वो हम ये कहेंगे, ये वो युग था, एक वो जमाना था जब ऐसे लोगों को हम एक्सेप्ट ही नहीं करते थे. एक्सेप्ट से मुराद ये है कि हम उन्हें समाज में रखते नहीं थे. वी आर सपोज दैट दे आर द कर्स ऑन आवर सोसाइटी. अगर किसी की फैमिली में, किसी समाज में, किसी पड़ोस में इस तरह के बच्चे का पैदा हो जाते थे, having some deformities or disabilities in their physical bodies, so they are not supposed to be the normal children, and they are also supposed, वो ऐसा माना था कि तो हमारे अभिशाप है, हमारे परिवार पे, हमारे घर पे, हमारे समाज पे, और हम क्या करते थे, उनको फौरन ही खत्म कर देते थे, दफन कर देते थे, हमको खत्म कर देते थे, like that. This was the era of exclusion. हम उन्हें मेन स्ट्रीम जो दूर की बात है, हम उन्हें कभी एक्सेप्ट ही करने के तैयार नहीं होते थे. This was the one type of era, one time of era, and this era was prolonged for a longer period of time. Then the society developed and we started, and what type of society and what kind of we developed, that we started accepting them, and we started accepting them in such a way that subject of amusement and use, like today, as we are just accepting the animals on the basis of mercy, on the basis of as a pet animal, in such a way we started accepting them. हम ऐसे accept किया उनको कि चलो भाई घर में कहीं किसी कोने में इस तरह के बच्चे पढ़े रहेंगे, and it was a kind of status, dear participant. एक status को हुआ करता था उस जमाने में कि ये फला के घर में ऐसा इंसान नुमा बच्चा है जिसके एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, वो देख नहीं सकता है, like that. तो इस तरह की चीजें होती थी और उस घर के बच्चे उनसे खेलते थे और फैमिली या गेस्ट जो आते थे वो उनसे एंजॉय करते थे. That was a different era, and that is the second era of their process of inclusion. And again the third era, that is era of prohibition. हमने लीगली उन्हें प्रोहिबिट किया, लीगल डिस्क्रिमिनेशन एंड विचक्राफ्ट. हमने लीगली ऐसे बच्चों को ये डिक्लेयर किया कि ये डिस्क्रिमिनेट किए जाने लायक हैं, इनको सोसाइटी में मेन स्ट्रीम में रखने की जरूरत है, और कुछ इनके ऊपर काला जादू का असर है इसलिए ऐसे हो गए, like that. और उस टाइम के, उस जमाने के पोप्स ऑफ द चर्चेस एंड डिफरेंट
religious clerics were declared about such kind of people. वो भी एक era था, वो भी एक era काफी दिनों तक चला. सोसाइटी धीरे धीरे ग्रो हुई, प्रोसेस ऑफ इंक्लूजन आगे बढ़ा. द एरा ऑफ सिंपैथी एंड असाइलम व्हाट स्टार्टेड. हमने इंस्टीट्यूशनलाइज किया कि ऐसे लोग ठीक है समाज में रहेंगे, सोसाइटी में सर्वाइव करेंगे, बट नॉट इन द मेन स्ट्रीम. दे विल सर्वाइव ओनली एज ए separate in a segregated part, in a I can say the excluded environment. We will give them an excluded environment, and for that purpose we have constructed the kind of asylum, or I can say the अनाथ आश्रम की तरह से कुछ ऐसे आश्रम खोले गए जहाँ पे इस तरह के बच्चों को रखे जाते थे और उनको इस तरह की ट्रीटमेंट दिया जाता था कि उनको खाने पीने की प्रोवाइड कर दी जाती. Now gradually we came in the era of isolated setting. अब हमने उसे एक्सेप्ट किया कि ठीक है भाई चलिए इनको आपने आइसोलेटेड सेटिंग में रखा और स्पेशल स्कूल्स प्रोवाइड किए गए. एंड दैट स्कूल वेर ओनली लिमिटेड अप टू दे कैन लर्न देयर ओन एक्टिविटी. सिर्फ उसमें ये सिखाया जाता है कैसे वो चीजों को सीख लें जिससे वो खुद अपने काम को वो कर सके, अपने काम को अंजाम दे सके. स्टिल दे हैव नॉट बीन ट्रीटेड एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी, एज ए कंट्रीब्यूटर ऑफ द सोसाइटी in our nation building. But after that era, the new era came. That was the sixth era, the era of segregated setting. We started accepting them in the same school, but I will say again, but in the separate classroom, not in the same classroom where the normal children were being taught. So this was also again the philosophy of inclusion. But that was a kind of process, and that process कि भाई उसके स्कूल में एक सेक्शन स्पेशलाइज्ड होगा जहाँ पे हम ऐसे बच्चों को रखेंगे, उनको पढ़ाएंगे, उनको उस तरह की एजुकेशन दी जाएगी. And we know very well how they have been treated in the separate classroom, in the separate section of the school, and they have been given very less attention by the teachers. भाई अब ये बच्चे हैं क्लास में, ये क्या पढ़ेंगे, चलिए ठीक है रहेंगे क्लास में, बैठे रहेंगे. But the next era, that is the last era, the era of inclusive setting, it talks about the complete inclusive process. Regular classroom, until and unless they will not be given place in the regular classroom where the normal children are being taught, that it means that the dream of inclusion will not be completed. That is, the inclusion describes much more than the acceptance of children with disabilities in the mainstream. सिर्फ हमने उनको एक्सेप्ट कर लिया और क्लासरूम में बैठा दिया, that is not sufficient. Inclusiveness do not focus on the accommodation. चलो हमने बैठा दिया उनको क्लास में, हम उनको स्कूल में ला दिए, एक सेक्शन में हमने जगह दे दिया. अब हमने ये भी कह दिया कि चलिए क्लास में बैठ जाइए जहाँ पे नॉर्मल बच्चे बैठे, but you will not participate. You will not be given due advantages. You will not be given any heed by the teachers. These children in general, but are focused on the restructuring of the school. Basically, the real inclusion is restructuring of the school, colleges, and universities to accept and provide for the needs of all students, whether irrespective of their differences, their disabilities. In inclusive program, specialized instruction or supports are provided to any student who is in need of support without labeling him or her as a disabled. If you label के बिना, I will just clear it in my next slides. In other words, no discrimination is made among the able and disabled children. No discrimination is made on the even all the children in the states of their disability are welcome by making the same school and class along with their non-disabled peers. If we are able and we are successful to do so, then it means that we are just fulfilling the dream of inclusion, then we are abiding the philosophy of inclusive process. Dear participants, sometimes we always do these mistakes and these difference. That's why I kept here. What is the differentiation of integrated inclusive approach? When we are adopting this inclusive philosophy, inclusive approach, we must know whether we are really adopting the inclusive approach or we are adopting the integrated approach. So, as far as the integrated approach is concerned, education for some, this is not inclusion. हमने कुछ किसी खास टाइप के बच्चों को, किसी एक तरह के बच्चों को
एक जगह इकट्ठा किया और पढ़ाना शुरू कर दिया, दिस इज नॉट इंक्लूजन. Meaning thereby inclusion is education for all type of children, irrespective of caste, creed, culture, religion, and disability. Then we are avoiding the inclusive education, and then we are following the philosophy of inclusion. If we have restricted our classroom, it means that our classroom is static, that is integrated approach. If we have flexibility and we are welcoming all type of children in the classroom, then this is inclusive education. Collective teaching, individualized teaching. We are teaching in a group, but we are not considering each and every individual's right, because we have already selected a single type of group and single type of student. But here we have different type of students, but we are caring each and every type of student. Learning in isolated areas. Suppose if we are teaching the rural students in their own socio-economic and environmental condition, rural areas, that is not inclusive approach. That is a integrated approach. And if we are learning in integrated areas, where the all type of students are residing, where the urbans, rulers, all cultures students are over there, that is inclusive approach. Diagnostic perspective and holistic perspective. Similarly, opportunities limited by the exclusion. In integrated approach, opportunities are not given to all students equally, but equality of opportunities for all is one of the important aspects of inclusive approach. So disability is viewed in integrated approach, but curricular is viewed. जहाँ पे हम disabled बच्चों को उसकी disability के बिना पे हम group करते हैं, but here we consider them all that curricular as a view. Our curriculum should be like that each and everyone is capable and able to get place over there. Labeling children, their disability wise, oppose all kind of labeling. Basically, inclusive education oppose all type of labeling on the basis of their disability or any such kind of labeling. This is what the basic difference of integrated and inclusive approach. What are the biggest barrier as far as their inclusion for differently abled concerned? We have heard so many aspects of disability and differently abled persons. Let's know what are the biggest barrier, whether they are really barrier which we think or somehow different barrier. How they are, especially here I would like to mention that academic barrier and of course physical and social barrier. But for this purpose, it will be better that these barriers, I've invited 3 persons, 3 students, and I hope that they all are present over here. Ibrahim, Neil, and I think that they will experience and they will share their own experience if he has joined. Ibrahim, can you hear me? Ayub, Muhammad Ayub? Yes, sir, I am here, sir. Okay. Mr. Muhammad Ayub, I will Yes. This is Muhammad Ayub, my dear participant. He is completely blind, but he was not blind by birth. That is the one of the important and unique feature of this participant, invited participant is Muhammad Ayub. And I request him, he has done, and I would like to congratulate him here that yesterday he got result for the admission in PhD. So Muhammad Ayub, I would like to hear your own experiences. Thank you, sir. Assalamu alaikum, everybody. Am I audible, sir? Am I audible, sir? Yes, Okay. yes, Okay, yes, okay, yes. thank you. Thank you, sir. Yes, Okay. So, मेरा नाम मोहम्मद अयूब मेर है एंड मैं कुपवारा कश्मीर से हूँ, एक फॉर फ्लंग एरिया जम्मू एंड कश्मीर में है, और मैं बाय बर्थ विजुअली इम्पेयर्ड हूँ, बट अप टू 8th क्लास I was able to read and write through my naked eyes. And उसके बाद क्या हुआ कि मेरी eyesight gradually decrease हो गई because I am RP patient, और RP patient में क्या होता है, retinitis pigmentosa में क्या होता है कि आपकी eyesight जो है gradually decrease होती है. तो उसकी बिना पे फिर 8th क्लास में मैं मतलब इस नतीजे पे पहुंचा कि I was not able to neither write nor read.
तो उसके बाद मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो फ्रॉम 1st to 12th तक वो मेरे कश्मीर से ही हुई है, यानी कुपवारा रीजन से ही हुई है, और एक रूरल एरिया में मेरी स्कूलिंग हुई है। और अप टू 10th क्लास आई वाज नॉट अवेयर अबाउट द ब्रेली सिस्टम, द ऑडियो बुक सिस्टम। तो यहाँ पे ये शो करता है कि हाउ मच रूरल इंडिया इज फेसिंग सच प्रॉब्लम्स। So how much rural blind or visually impaired or physically challenged from the rural areas are facing such a problems in rural area। तो उसके बाद क्या होता है कि मेरी जो पढ़ाई है उसके बाद 10th में मेरा एक टीचर होता है जो मुझे बोलता है कि बेटा श्रीनगर में एक स्कूल है जहाँ पे आप श्रीनगर में एक स्कूल होता है अभिदानंद होम फॉर द ब्लाइंड। तो वहाँ पे मैं जाता हूँ, मेरे एक टीचर मुझे गाइड करते हैं कि आप वहाँ जाइए। उसके बाद मैं वहाँ जाता हूँ, थोड़ा सा ब्रेल मुझे वहाँ सीखने को मिलता है और थोड़ा बेसिक कंप्यूटर, और मुझे वहाँ ये भी पता चलता है कि ब्लाइंड लोग पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। तो उसके बाद मैं वहाँ से आता हूँ, अपने नॉर्मल स्कूल फिर ज्वाइन करता हूँ, और 11th और 12th पास करके मैं देहरादून जाता हूँ, जहाँ पे मैं बेसिक ट्रेनिंग लेता हूँ ब्रेल की और मोबिलिटी और कंप्यूटर की। तो उसके बाद जो है उसके बाद क्या होता है कि मुझे देहरादून में अलीगढ़ के बारे में पता चलता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ब्लाइंड के लिए एक इंक्लूसिव माहौल है, एक अच्छा माहौल है, जहाँ पे हम अपनी तालीम को पूरा कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो फिर मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आता हूँ और यहाँ पे अपना BA और MA विद UGC नेट JRF, और yesterday I also selected for PhD। So ये मुझे यहाँ पूरा अलीगढ़ का एक वो हिस्ट्री है। और नाउ द चैलेंजेस, व्हाई द चैलेंज कहाँ पे आती है और उनके सॉल्यूशंस किस तरह से टीचर्स हमें दे सकते हैं। सबसे पहले चैलेंज जब मेरा आया था 8th में, तो मेरी ISI डिग्री हुई थी। उसके बाद मुझे टीचर ने ही गाइड किया था कि बेटा आपके लिए एक स्कूल होता है, और जो हमारे पेरेंट्स को पता नहीं होता है या अदर लोगों को पता नहीं होता है। तो यहाँ पे टीचर का एक बहुत रोल बनता है कि वो इन चीज़ों के बारे में सर्च करे, पढ़े कि हाउ the differently abled students can be enrolled in the schools, how they can guard the education। so ये यहाँ पे टीचर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, नंबर 1। और नंबर 2, जब मैं उसके बाद अलीगढ़ आया, तो अलीगढ़ में भी मेरे टीचर्स ने मुझे गाइड किया कि बेटा आपके लिए ये चीज़ें हैं, ये सॉफ्टवेयर्स हैं, इनके ज़रिए से आप पढ़ सकते हो। तो मुझे लगता है कि विजुअली इम्पेयर्ड के मामले में या डिसेबिलिटी के मामले में मुझे लगता है कि फैमिली तो जाहिर सी बात है आपको फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकती है, मॉरल सपोर्ट कर सकती है, बट अवेयरनेस के रिलेटेड टीचर से बढ़कर मुझे नहीं लगता कि कोई रोल निभा सकता है। टीचर्स हैव ग्रेट रोल टू प्ले इन दिस रिगार्ड। सो बट इसमें ये होना चाहिए कि जो बच्चा हो, जो कंसर्न पर्सन, जिसको जो ये प्रॉब्लम फेस करता हो, उसका ये और अपने डिफरेंट लोगों को अपनी प्रॉब्लम शेयर करे, ताकि फिर जाके वो लोग उसको इस चीज के रिलेटेड हेल्प कर सकते हैं। एंड आई होप कि मैंने यहाँ तक पूरा बोल दिया। एंड थैंक यू आफ्ताब सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक ओवर हियर। So I am really thankful to you for giving me this platform to present my views in this in this galaxy of scholars। So thank you, sir. Ayub? Hello? Can you hear me? Actually, we wish to know what you people or what type of visually challenged people expect from the. Yes, sir. Yes, sir. So from the teacher? The thing. आप लोग जैसे. Yes, sir. Yes, sir. वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं टीचरों से? That we want to know. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर सबसे बड़ी बात जो हम okay, sir. Sir, the first thing that we expect from the teachers, I already told you, sir, that teachers are the I can say the stakeholders that have a great
You are सर आवाज नहीं हो रही। role to play for the person with disabilities. I already told, but कैसे बताइए आवाज we क्या थी आपकी? सर मैं ये कह रहा हूँ कि टीचर्स का बहुत रोल होता है, लेकिन हमें ये है कि मैं सर ये कहना चाहूँगा कि टीचर्स का बहुत रोल है हमारी लाइफ में। तो मैंने ये सर ऑलरेडी बोला, लेकिन अब हम टीचर से क्या एक्सपेक्ट करें? एक एक्स्ट्रा केयर होना चाहिए, और दूसरी बात ये कि हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। मतलब बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी होते हैं जो ये सोचते हैं कि अरे कुछ नहीं कर सकता है, छोड़ दो, लेकिन उनको उनके अंदर ये नॉलेज होनी चाहिए कि ये बच्चे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। उनको इस बारे में पढ़ना चाहिए। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ऐसा माहौल है, लेकिन रूरल एरियाज में तो इस तरह का माहौल देखने को नहीं मिलता है। तो उन टीचर्स को ये मॉडल फॉलो करना चाहिए, AMU वाला मॉडल। या हमारे इंडिया में डिफरेंट स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स मिलते हैं ब्लाइंड को, तो उन मॉडल को फॉलो करना चाहिए। और उस जी सर, फिर वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपने डिसेबिलिटी बच्चों के ऊपर सर। Thank you, Ayub. Very much. Thank you. थैंक यू। There is one Thank you, sir. student, that is Shanwaz. Perhaps he has joined. Shanwaz? हेलो सर, हाँ गुड आफ्टरनून। हेलो। हाँ बोलिए। जी, मेरा नाम मोहम्मद शहनवाज अहमद अंसारी है जी और मैं बिहार प्रांत का जो है एज TGT पोस्ट पर मैं एज अ टीचर सेलेक्टेड हुआ हूँ। अभी TR2 में जो बहाली हुई थी उस पर मैं उसके तहत मैं TGT अरबिक टीचर पर पोस्टेड हुआ हूँ। तो मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैं यूपी के आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में जिस गांव का नाम बड़सरा आइमा, वहां से मैं ताल्लुक़ रखता हूं, वहां से मैं बिलोंग करता हूं। और मैं एक विजुअली चैलेंज स्टूडेंट रहा हूं, साथ साथ मेरा भी परसुइंग एमएड भी हो रहा है। तो मैं अपने बारे में बताऊंगा कि मैंने अपनी एजुकेशन या अपनी शिक्षा कैसे हासिल की, जबकि इतने सारे चैलेंज आए मेरे ऊपर। साथ ही साथ मैं एक विजुअली चैलेंज हूँ, तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा सर की इजाजत के साथ, और जो भी मेरे इसमें जुड़े हुए हैं उन सबकी इजाजत के साथ मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा। जबकि जैसा कि मैंने बताया, मेरा नाम मोहम्मद शहनवाज अहमद अंसारी है। मैं जो है पहले तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से मैंने जो भी कुछ एजुकेशन लिया है वहां से लिया है, तो मैं इसको एक एक करके बताता हूँ। देखिए, जबकि गांव में क्या होता है कि जो भी कोई दिव्यांग हो, हैंडीकैप हो, तो उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है। मैं उसी गांव से हूं जहां बिल्कुल लोग बैकवर्ड एरिया के लोग हैं, बैकवर्ड के लोग हैं, तो उसी गांव का मैं हूं। तो बहुत परिस्थितियां ऐसी आई कि, और ये है कि मेरे पेरेंट्स भी जो है मिडिल क्लास के हैं, तो ये पढ़ाई लिखाई में और कोई नहीं था, मेरे भाई और भी हैं, लेकिन ये है कि मुझे मेरे पेरेंट्स से एक मेरे जो AMU के स्कूल के ही एक टीचर हैं, उनसे उन्होंने मुलाकात किया, तो उन्होंने बताया कि ब्लाइंड लोग भी, विजुअली चैलेंज लोग भी पढ़ाई करते हैं और वो सोसाइटी में अपनी जगह बनाते हैं और एक अब खुद सेल्फ डिपेंड होते हैं और सोसाइटी को भी योगदान करते हैं। तो ये चीजें मेरे पेरेंट्स को समझ में आया और उन्होंने इस पे खोजबीन किया। उनसे कहा कि कैसे, कहाँ एडमिशन होगा, क्या होगा, तो उन्होंने पूरा डिटेल मेरे फादर को और मदर को बताया। तो 2000 में जो है मेरा एडमिशन करवा दिया। 2000 में मेरा जो एजुकेशन, मतलब नर्सरी जो स्टार्ट होता है, और 2012 में मैंने हाई स्कूल किया। तो देखिए, क्योंकि जहाँ पर स्पेशल स्कूल होता है वहाँ तो फुली पूरा सपोर्ट किया जाता है, चाहे वो जो है रीडिंग सेक्शन हो या म्यूजिक का जो भी क्लासेस हो या फिर रिकैनिंग हो, साथ ही साथ एजुकेशन, इतना जबरदस्त एजुकेशन वहाँ दिया जाता है। वहाँ के टीचर बहुत कोऑपरेट थे। तो उसके बावजूद हम लोगों ने उनकी मदद से पूरा जो है हाई स्कूल बहुत अच्छे तरीके से हो गया। तो बहुत ही अच्छा रहा उस पीरियड का हमारा एजुकेशन लेने का, जो है कि हर एक चीज आसान करके, और एक बिल्कुल जो वहाँ के टीचर थे
एज अ पेरेंट हमारे साथ सलूक किया करते थे, और इतने अच्छे से जो कि पढ़ाया लिखाया कि आज हम एज अ एक टीचर के पोस्ट पर बिहार में मौजूद हैं। तो ये हमारा जो है जो उसके साथ साथ सारी जो चीजें मैंने बताया, एजुकेशन के साथ साथ हर एक चीज, मतलब वहाँ कैरिकुलम वगैरह भी सिखाया जाता था, जिससे कि वहाँ के पढ़े हुए लड़के किसी भी फील्ड में जाएं वो अपने आप को एक इंडिविजुअल, एक इंफरादियत जाहिर करें। फिर उसके बाद देखिए चैलेंज तो आता ही है, डिसेबल पर्सन को बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। जैसे हम इंटर में आते हैं, और इंटर में वहाँ पर सीनियर सेकेंडरी बॉयज स्कूल है, और वहाँ से हमने इंटर किया। उसमें क्या हुआ कि एक तो स्पेशल स्कूल होता ही है, जब हम किसी नॉर्मलों के साथ बैठ के या उसके साना बसाना पढ़ते हैं, तो क्या होता है कि टीचर का थोड़ा सा कोऑपरेट कम हो जाता है। वो ध्यान, क्योंकि अब जाहिर है कि दो चार लोग होते हैं, बाकी सब नॉर्मल बच्चे होते हैं, तो इतना उनका ध्यान नहीं हो पाता है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने पूरी मेहनत की, और अपने दोस्तों के साथ और कुछ इंडिविजुअल टीचर थे उनके साथ हमने लगन से उनके साथ जो है मेहनत करके, और उनको अपना एक आइडियल टीचर मान के उनसे हम सीखते रहे, वो हमें बताते रहे। तो फिर हमने बहुत अच्छे फर्स्ट पोजीशन हमारा इंटर में भी आया। तो लेकिन वही है कि कुछ चीजें जैसे कि होना चाहिए, जैसे ब्रेल बुक्स है या ऑडियो बुक्स हैं, वो चीजें कम होती है, क्योंकि अहमदी स्कूल फॉर विजुअली चैलेंज जो स्कूल है एएमयू का, वहाँ पे सारे टीचर्स नोट्स बनवाते थे और तमाम चीजें पढ़ाते थे अच्छे से, वो अलग था। लेकिन यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी में जैसे हमने इंटर किया, तो वहां पर क्योंकि टीचर्स इतने लोग अवेयर नहीं थे और जानते नहीं थे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी कुछ टीचर्स का बहुत बड़ा साथ रहा, योगदान रहा, हमने बहुत अच्छे से इंटर भी पास कर लिया। फिर इसी तरीके से ग्रेजुएशन हमारा चलता रहा, अरबिक डिपार्टमेंट से हमने ग्रेजुएशन, मतलब अरबिक से हमारा ग्रेजुएशन रहा, फिर बीएड किया, फिर एमए किया उर्दू में, उसके बाद फिर एमएड अभी हमारा परसुइंग है, और साथ ही साथ हमारा जीआरएफ है। ये तमाम टीचर्स की कोशिश और काविशों से ये तमाम डिग्रियां और तमाम ये जो भी कुछ हमने किया, ये सब टीचर की ही देन है और हमारे पेरेंट्स की देन है। तो हम चाहते हैं कि देखिए, जो भी कोई मेहनत करने के लिए ठान लेगा और वो सच्चे दिल से नियत कर लेगा, तो यकीनन वो सफलता मिलेगी उसको जरूर। बस बशर्त ये है कि हम पहले कदम बढ़ाएं, यानी कि डिसेबल पहले कदम बढ़ाएं, उसके बाद टीचर का योगदान रहे, साथ रहे, टीचर सपोर्ट करे, पेरेंट्स सपोर्ट करें, तो यकीनन है कि वो बहुत अच्छे से अपने मंजिल को पा सकता है। जिसकी वजह से आज मैं जो भी मुझे मुकाम मिला है, एक टीचर का हैसियत मिला है, आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। सर, मैं बाकी सर का और जो हमारे डॉक्टर आफ्ताब सर हैं और जो यहाँ पर लोग हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत थैंक्सफुल हूँ उनका मैं, कि मुझे मतलब कुछ मौका दिया बोलने के लिए, मेरी समस्याओं को जाहिर करने के लिए। इसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आगे और भी जो डिसेबल बच्चे आए या विजुअली इम्पेयर्ड आए, उनके साथ ऐसे ही जो है शाना बशाना उनकी हेल्प की जाए, उनको जो है नोट्स अवेलेबल करवा दिए जाए, और जहां तक हो सके उनको ऑडियो किताब या ब्रेल बुक्स अगर हो तो उसको मुहैया करवा दिया जाए, ताकि एक हेल्दी एजुकेशन वो पा सके और सोसाइटी में अपना मुकाम बना सके, और लोगों को इसके साथ शाना बशाना चल सके, और एक अहम जिंदगी, एक अच्छी जिंदगी जी सके। थैंक यू सर। Thank you, Shanwas. Thank you very much. My dear participants, I have tried my level best to introduce Sazia Parveen, but because of her some engagement, she could not turn up over. Basically, involving such kind of students is just the sharing their own experiences in real sense was my motto and my objective. Not to, and you have heard properly and you find it, the most of the students who have shared their experiences are, of course, they regards and they recognize the contribution of teachers, because we as a teacher, as a faculty member, not only groom the normal children, but we, if we take some little more, we can also contribute. एक क्वेश्चन है सर। Deepak sir, हाँ हाँ, एक क्वेश्चन है सर, प्रश्न है सर।
कोई सर जो आंख से कमजोर है, अंधा व्यक्ति है, तो यदि वो 20-25 के पार है तो उसके लिए भी कुछ व्यवस्थाएं हैं सर, ऐसा शिक्षा दीक्षा के लिए? आप दीपक सर इस सवाल का जवाब देंगे? हमारे पास अभी 15-20 मिनट लास्ट में आप लोगों की बात सुनने के लिए रखूंगा मैं, तो प्लीज जी वेट। सर, जी सर, जी सर, मिल नहीं पाता इसलिए पूछ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज सिचुएशंस, मैंने आपको डिफरेंट डेटा भी बताया, कुछ पुराने कुछ नए डेटा भी दिया आपके सामने, कुछ और भी दिया, और रियल एक आप ये देख सकते हैं कि हमने एक शेयर एक्सपीरियंस भी शेयर कराया। अपार्ट फ्रॉम दिस, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंश्योर्स इक्विटी, फ्रीडम, जस्टिस, dignity of all individual implicitly mandates an inclusive society for all, including person with disabilities. In the recent years, there have been vast and positive changes in the perception of the society towards the person with disability. No doubt, हमने 7 एरा को भी डिस्कस किया, और ये जो एरा हमने जो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, जो हम डेवलपिंग की तरफ और अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़े, इट इज अ काइंड ऑफ प्रोसेस, और हम अभी भी इस प्रोसेस में हैं. We have not completed the dream of inclusive education. We have not come at the end point. Still, we are struggling to bring them into the mainstream of society. So, society में awareness आया है, काफी हद तक आया. Further, it has been realized that their condition may be more better if the following barriers have been removed. Apart from these, बहुत से बच्चों ने बताया अपने barriers को, बहुत से बच्चों ने recognize किया कि वो barriers किस तरह से हमने उनको इस हद तक लाया, इस पॉइंट तक लाया, इस कामयाबी तक लाया. एक ब्लाइंड बच्चा विजुअली चैलेंज जीआरएफ क्वालिफाई कर रहा है. जीआरएफ क्वालिफाई करना नॉर्मल के लिए काफी चैलेंजिंग होता है. तो यू कैन इमेजिन, ऑफ कोर्स देयर इज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ द टीचर्स, वी एज अ फैकल्टी मेंबर, बट we can also contribute a lot. For keeping these mind, that we will see the barriers are social barrier, or you can say the socio-psychological barrier, physical barriers, political barriers, financial barriers, and school, college, university as a barrier. These are the barriers, and we take it one by one. I will not go in detail. As far as the socio-psychological barrier is concerned, you will find this. This is the most challenging. Socio-psychological barrier is most challenging barrier for the disabled, because the first where he brought up, that is society, his family, immediate society is family. And अभी आपने सुना इनसे क्या नाम अयूब से और शहनवाज से कि इनकी फैमिली, उनकी सोसाइटी रेडी ही नहीं थी कि ये भी कुछ कर सकते हैं. ये अयूब की जहां तक मैं जानता हूं तो इनकी तो पूरे मोहल्ले वाले खड़े हो गए थे कि अलीगढ़ जाएगा बच्चा, कश्मीर से अलीगढ़. And he came here and he qualified the GRF, and now he's going to qualify PhD and is going to get admission in PhD. Yesterday he received his entrance result. So keeping these points and these barriers, समाज जो है ना वो सबसे बड़ा barrier. और उसके बाद the mindset of the society, the mindset of the disabled person, mindset of the people, family members, parents. So, attitudinal barrier faced by the students with disabilities is physical and emotional bullying. आप थोड़ा सा देखिए कि हम किस नाम से बुलाते हैं. अक्सर even we as an educated teacher, we always call them not by their name, by their disabilities, and which is a serious barrier to learning. उससे उनका withdrawal होता है, interest में withdrawal of interest होता है कि हमें तो लोग हमारी डिसेबिलिटी से पुकारते हैं, हम तो सोसाइटी में बहुत एक तरह से एलिनिएटेड है, हमारा कोई इज्जत ही नहीं है. लाइक दैट सोसाइटी ट्रीट देम एज द ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल एंड आउटराइट ऑस्ट्रिसिज्म इन द स्कूल एंड कम्युनिटी. समाज उन्हें किस तरह से ट्रीट करता है? ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल एंड ऑस्ट्रिसिज्म, आउटराइट ऑस्ट्रिसिज्म. As with the society in general, it is important to consistent and strong advocacy must be given. इनके साथ खड़े होने की जरूरत है. Considering that the negative attitude of the stereotype are often caused by the lack of knowledge. और मैं तो ये भी कहता हूँ, मैं इसको बात को यहाँ पे कह रहा हूँ कि कोई जरूरी नहीं कि अगर आप इनके खिलाफ बोल रहे हैं तो आपको पता भी है इनके बारे में. बहुत से लोग अननोइंगली बोलते हैं, उनको पता ही नहीं. They don't have because of the lack of knowledge, lack of understanding about their challenges, about their problem, about their issues, and acceptance of the person with disability. और उसके बावजूद और उसके बाद एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो हम किसी को डायरेक्टली ब्लेम भी नहीं कर सकते हैं. इट इज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज, वो जानते ही नहीं इसके बारे में.
Now the second is physical barrier, the lack of wheelchair ramps for disabled persons. आप अपने आसपास यूनिवर्सिटीज को देखिए, अपने कॉलेजेस को देखिए, अपने इंस्टीट्यूट को देखिए, and you will find whether your college and institutes are disabled friendly. Any person who is having a single leg, he can approach to you in second floor, first floor, or third floor. This is what the situation of your college, university, office building, malls, park, playground, washrooms, and public transportation is the main difficulty identified by the several students with disabilities. When going to a school and public places, undoubtedly, most education institution structure do not respond to this requirement. बहुत से लोग तो सिर्फ इसीलिए हायर एजुकेशन में जाते हैं कि हमारी कॉलेज की जो क्लास है वो तीसरे नंबर पे है, तीसरी मंजिल पे, तीसरे फ्लोर, and there is no provision of lift, and they just quit the classes, class छोड़ देते हैं, and gradually they drop out in the higher education. It's about such kind of student. Why? There is a lack of facilities or assistive device to the aid of children. Like आप अब देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे हैं उनके पास स्टिक होता है जो बहुत ही वाइब्रेटिंग स्टिक होता है, उससे पता चल जाता है कि वो कहीं पक्के जमीन पे चल रहा है या कच्चे मिट्टी में चल रहा है या घास पे चल रहा है. That stick is not simple stick which we understand. आवाज नहीं आ रही सर. पीपीटी भी गायब हो चुका है, सर भी नहीं दिख रहे हैं. नेटवर्क कट गया वहां का लग रहा है. दिख तो रहे हैं अमित जी, लेकिन आवाज नहीं आ रही. आवाज नहीं आ रही है सर की. शायद नेट डिस्टर्ब हो गया मुझे लग रहा है. वेट कर लीजिए. अच्छा, ये डिसेबिलिटीज पर जो बात कर रहे हैं, सिर्फ ये जो सेंस ऑर्गन है हमारा, जो आईज या ईयर, सिर्फ उसी पर फोकस है या अदर डिसेबिलिटीज है उस पर भी फोकस है? जीवन सर आपसे पूछ रहा हूं. लेग्स पे भी फोकस है, सर ने कहा था ना ऑर्थोपेडिक. अच्छा, तो लिम्स बोलेंगे तो हाथ पांव समझिएगा. ओके. तो साहिल मैम, उसका परसेंटेज क्या होता है? आँख का जैसे होता है तो कितना परसेंटेज उसको माना जाता है कि ये डिसेबल है? वो तो सर बोले ना कि 40% तक में देते हैं रिजर्वेशन. यूजीसी के कैटेगरी के अनुसार तो 40% सही में है. मोर देन 40% चाहिए, एबव हो. मुश्किल होती है, डिसेबिलिटी यूनिट के होते हैं जी ना, उसमें परेशानी होती है. जैसे डाउन सिंड्रोम हुआ, क्लिन फिल्टर सिंड्रोम, ये सब में जिसमें आईक्यू थोड़ा सा ये होता है ना, वो सब में परेशानी. मैडम सामान्य भाषा में बोलिए जो हम लोग समझ सकते हैं विज्ञान की. वो कुछ बच्चे होते हैं तो उनका ये पिछका रहेगा, होंठ थोड़ा बाहर निकला, आईज थोड़ा बाहर, डाउन सिंड्रोम. अच्छा. और कुछ होते हैं मेल्स जो होते हैं मस्कुलर होंगे, आवाज भारी होगी,
तो वो या फेमिनिज्म ज्यादा, मैस्कुलिनिटी ज्यादा, तो वो सब सिंड्रोम्स होता है। IQ जो होता है वो कम होता है। हमें लगता है मैम 3 प्रकार के होते हैं, एक BI, HI और EMR, विजुअली इम्पेयर्ड, हियरिंग इम्पेयर्ड एंड मेंटल रिटार्डनेस। 3 कैटेगरीज होती हैं जो उसमें स्पेशल ब्रिगेड वगैरह में पढ़ाई जाती है, जहाँ तक मुझे पता है। हम लोग जैसे अभी जेनेटिकली बात कर रहे हैं, एक मतलब कि जीन्स में जो डिसऑर्डर हो जाएगा ड्यूरिंग ये रिप्रोडक्शन के समय, तब भी बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, तो वो भी डिसेबल कहलाते हैं। जी जी। अपने वहाँ जो सर कह रहे हैं वही एक्सेप्ट किया जाता है 3 तरह का। एक ऑफिशियली अगर देखा जाए तो चीजें ऐसे ही चलती है। नहीं, उनको भी माना जाता है। मैडम बायोलॉजिकली बोल रही हैं, सर बोल रहे हैं कि मैं समझ रहा हूँ। हाँ अरे ये पालसी भी तो इंक्लूडेड होता है इसमें। हाँ हाँ, वो भी होता है। पोलियो तो आएगा ही, या सेरिब्रल पैल्सी है वो भी आएगा। तो पोलियो मुक्त तो भारत हो चुका है नशा। वो भारत नहीं, वो WHO का काम है, तो पूरी दुनिया में वो लोग चला रहे हैं। अमित जी आप फिलोसफिकल बोल रहे हैं, मैडम तो बायोलॉजिकल बोल रही है, आप फिलोसफिकल। अरे फिलोसफी, बट जो सर अभी वो है प्रभावित है, उनका तो देखना है ना, वो पढ़ रहे हैं कि लिख रहे हैं, आगे क्या कर रहे हैं, उनके लिए तो चलेगा ही। मान लीजिए अब नहीं बच्चे उसका शिकार हो रहे होंगे। नहीं फिलोसफी तो सब क्यूरियस माइंड की खोज है ना, तो सब जगह ढूंढता है कि क्या है नहीं है, क्या चल रहा है। नहीं सर, मैंने काम किया है, हादी हसन साहब एजुकेशन में हुई जाज थे यूनिवर्सिटी डिसेबिलिटी यूनिट के, तो अच्छा काम अलीगढ़ में है डिसेबल में, तो वॉलंटियर के तौर पे मैंने काम किया है इन लोगों के साथ। So participant, can you hear me now? Yes, sir. 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 आवाज कट रही है सर। Sir, still your voice is not audible. नहीं आ रही आवाज आपकी। इंटरनेट का मैटर लग रहा है। आवाज आ रही है? नो सर। Now you are visible, sir, but voice is not coming. सर आवाज माइक सर ऑन करिए अपना। आप म्यूट हैं, अनम्यूट कीजिए प्लीज। It's okay now? Yes, sir. Okay. Where we are discussing about basically the second barrier, that is physical barrier. Now we will switch on the third barrier. जी सर। That is political barrier. You will find here that policy makers, like such as politicians, even they don't have they don't know what is inclusiveness, and even some are having opposing views, and that is the obstacle to the implementation of the inclusive policies. These obstacles in inclusive education consist of a sort of क्लियर नहीं आ list रही of है। factors that can affect a student with आवाज डिस्टरबेंस हो रहा है सर, आवाज मैंने का माइक कट रही है। क्लियर आवाज नहीं आ रही साफ साफ।
ओके ओके ओके, अब आ रही है? यस सर। जी जी आ रही है। सर आवाज या स्लाइड चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल बैरियर, अगर आवाज अभी भी प्रॉब्लम हो तो बताइए। नाउ इट्स ओके? यस सर। आवाज ठीक नहीं आ रही सर, डिस्टर्बेंस आ रहा है। आप लोगों की आवाज कट कट के आ रही है। सर क्लियर नहीं आ रही है। Resources are big challenge and big challenge to inclusion. India is low education for all Indians. Institution would be required to make financial provisions for providing facilities like lift, ramps, barrier-free classroom and toilets. Of course, if you will see, these are all the facilities which are required for barrier-free access to the disabled children. That requires handsome amount, and that amount comes from our Ministry of Finance. If they are ready to provide you, if they understand the severity of the inclusion of these people, then it is possible to bring them in the mainstream of society. The technology could be used in the form of motion sensors to open doors, use of buttons for easier. This can also help a lot for those who cannot work properly. सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। क्लियर आवाज नहीं आ रही। हाँ सर, थोड़ा सा नेटवर्क हो गया, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ी देर तक बात करेंगे हम लोग तो आवाज क्लियर आने लगेगी। आई थिंक तो how this college and university is a barrier. Just see here. I have tried to find out these 7 points that college, university itself is a barrier. When a child come having some or other kind of disabilities, we always ignore them. We don't want to enroll them. We don't want to get admission to them in our school and college. Because of that, that is one of the basic and important reason. क्या हुआ सर? हाँ? And the second one, that is building and infrastructure facilities. You just, मैंने पहले भी ये बात कही थी कि the building in which we are just discharging our duty, the condition of that building and that infrastructure, whether they are responding to these such type of people who are disabled, they are having such kind of accessible for them. आमतौर पे देखा जाता है कि जो प्रिंसिपल का चैम्बर है या जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट का चैम्बर है वो तीसरी मंजिल है या काफी दूर अंदर, that create a problem for them. Similarly, the classroom size and pattern. The classroom is constructed and built. And the fourth one is how we communicate to the disabled person. What are our languages? How we deal with them? Whether we deal them equally. अक्सर हमारा जो लैंग्वेज या बात का तरीका होता है वो डिफरेंट होता है. वी ऑलवेज ट्राई टू इग्नोर देम. हम कहते हैं ठीक है बेटा जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा. वी डोंट ट्राई टू हियर देयर इश्यूज, देयर प्रॉब्लम्स. हमारा कम्युनिकेशन एक नॉर्मल बच्चे के लिए और एक डिसेबल बच्चे के लिए डिफरेंट हो जाता है. It is communication. And the fifth one is curriculum problem. Our curriculum is a traditional curriculum. We are not ready to change. We are not ready to prepare our curriculum according to the needs of the trained teachers.
even they have not trained as far as the inclusive education is concerned. They don't have much about they don't have knowledge about the inclusive education. सबको दिखाई दे रहा है स्लाइड? Yes, sir. 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 Okay, I think it's okay. तो आवाज आ रही है तो मुझे लगा सुनाई नहीं दे रहा है कुछ लोग. Kindly बाकी लोग म्यूट कर लें. थोड़ा नेटवर्क इशू है. Please cooperate. Okay, thank you. Let's start again. So the another one is untrained teacher. What I told you. कुछ टीचर है जिनके पास ट्रेनिंग नहीं है इसके बारे में. They are also a kind of barrier because आवाज नहीं आ रही करेक्ट से. they don't know how to treat them. And must have not for disabled children or in general, but as far as the disability is concerned, disabled children are concerned, there must be a guidance. There is no such kind of guidance. Fortunately, Aligarh Muslim University and some like BHU, Aligarh Muslim University, and some central universities have the guidance cell, which name, and it has been established by the UDC scheme. अभी मेरे पास एक मैसेज भी आया सामने. एक मंजूर साहब है शायद, जहां तक मुझे याद आ रहा है. उन्होंने मैसेज किया कि सर हम लोगों ने डिसेबिलिटी यूनिट और for the disabled children and for the disabled people that will pay for them as well as for their grooming, for their adjustment, for their psychological empowerment. These are not available. That is a kind of barrier as far as their ministry is concerned, as per their inclusiveness and inclusion members. I would like to say here, until and unless we are not ready to implement हमें पता है कि दुनिया मतलब जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ 1964-66 में कोठारी कमीशन की पॉलिसी आई. 1986 में 2020 की वो भी आया, लेकिन हम ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे इंप्लीमेंट ना करें. सो अगर आपको पॉलिसी प्रोस्पेक्टिव की बात करें तो हम Sir, your voice is not clear, sir. Yes, sir. Very well pronounced.
पार्टिसिपेंट थोड़ा बेयर करिए, थोड़ा नेटवर्क इशू है, उसे कर रहे हैं, सॉर्ट आउट कर रहे हैं, प्लीज। ओके सर। ओके ओके सर। ओके सर। ठीक सर, ठीक। ओके सर। नहीं आया, बड़े वाले पे नहीं आया, उससे कोई भी नेटवर्क नहीं दिखा रहा। सर के उसमें दिखा रहा हूँ, सर के उसमें दिखा रहा हूँ लैपटॉप में। आपका नेटवर्क चल रहा है? हाँ, नेटवर्क चल रही है। आप शेयर करा दीजिए, ठीक है। Can you hear me now, participants? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Oh, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Slide is next slide. Sir, if network is not good, then you can share your PPT to us so we can read and understand some. okay.
My slide. No, sir. Sir, kindly share Slide share हो your रहा है क्या PPT मेरा? with us. वेट And पार्टिसिपेंट्स प्लीज वेट, पार्टिसिपेंट्स प्लीज वेट। नहीं हो रहा सर, नहीं हो रहा। पार्टिसिपेंट आप प्लीज वेट करें, थोड़ा सा बेयर करें, नेटवर्क प्रॉब्लम है इस वजह से नहीं हो रहा है, प्लीज। okay, sir. ओके सर, ओके। आफ्ताब सर इंटायर स्क्रीन सेलेक्ट कर लीजिए आप शो करने में। नहीं हो रहा है सर। अपने मोबाइल से आप कनेक्ट कर रहे हैं, हॉटस्पॉट से कर रहे हैं सर क्या? Just a minute. Now PPT is visible, sir. विजिबल है सबको? हाँ दिख रहा है सर। Yes, sir. Yes, sir. basically, I was just coming on the next slide. Okay, sir. Extensive use of technology in teaching and learning to overcome the language barriers. Of course, if we use various new technologies in our teaching learning that can overcome the language barrier and provide more opportunities for the Divyang students. Strengthening and modernizing the university libraries to the guarantee and appropriate quantity of books, software that are tailored in the requirement of the interest. So these are the some facilities which we can use and we can also कर सकते हैं. The Center
for disability studies is introduced. I've already told you that there is the provision of the in the University Grant Commission that if you have a college or university, you can take this type of disability studies center and study unit, developing a sensitive ecosystem for people with disabilities. You can also create an ecosystem with such kind of people. The last but not the least, now the responsibilities come on our shoulder, and that's I wanted to communicate with these few points that what is our role, what a teacher can play a very crucial and important role, being a teacher or being an administrator or principal of the university or college or any institution, for the equity and inclusion of especially such kind of children, that is disabled children. So first of all, what you can do that identify and accept the children with disabilities. Basically प्रॉब्लम क्या होती है कि हम जैसे कि हमें पता है कि हमारे क्लास में कुछ बच्चे बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, कुछ बच्चे मीडियोकर होते हैं, कुछ बच्चे स्लो लर्नर्स होते हैं. But we never try to identify whether some students are there having some disabilities, deformities. No, we never try to do this. And if we came to know, we always try to ignore them. This is not our role. And of course, this is not our role in case of when we are following and we are abiding and we are trying to bring them in the mainstream of society through inclusive process. So this is our first and foremost duty, or we can say the role, to identify them and accept them. Accept them as a member of the class. Accept them as an equal class member, equal class student. Don't ignore them. Involve them, include them in our teaching learning process, in your teaching learning process. Fortunately or unfortunately, you are not able to know much more about their inclusion, about the inclusive process, about the philosophy of inclusion. Try to know about the inclusion. Acquire knowledge about the inclusion. हम जान सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे लिटरेचर है जिसको हम पढ़ें, बहुत सारे ऐसे पेपर्स हैं, आर्टिकल्स हैं जिसे हम पढ़ें, तो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन इनके बारे में कैटेगोरिकली मिल सकती है. हमें तो फिर हमें जानने की जरूरत है. ऐसा नहीं हो सकता कि हम ये कह दें कि नहीं भाई हमको तो इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ाया नहीं गया, तो हम कैसे इनको बताएंगे, हम इनको कैसे डील करेंगे. फिर तो ये भी हो जाएगा भाई हमने बीएड 1 साल वाला किया है, तो हम बीएड 2 साल के बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे. अब तो बीएड 4 ईयर आ गया है और हम में से बहुत से लोगों ने बीए 2 साल 3 साल में किया होगा, तो क्या वो बीए 4 ईयर को नहीं पढ़ाएंगे. So there is opportunity and there is this is our role, that we can know and we can acquire the knowledge about the inclusion, and having positive and friendly attitude toward the disabled student. We always must have the positive attitude towards such kind of students. Meaning thereby we should not be very much sympathetic, कि हम बहुत ज्यादा sympathetic हो जाए कि जाओ बेटा तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं क्लास में, हम सब देख लेंगे, हम आपको पास भी कर देंगे. No, I mean to say you have to be very much positive. You can ask question with them also. Whatever you have written on the blackboard and whiteboard, you tell them by reading those lines, because they are not visible. They cannot see what you are writing on the blackboard. They are visually challenged children in your class. So this is our role and this is our duty to at least read it out once what we have written on the board. Participate and allow them to participate equally in the classroom. Developing positive attitude between normal and disabled children. हमेशा टीचर का ये रोल होना चाहिए कि कभी भी डिफरेंशिएट ना करें कि ये बच्चे डिसेबल्ड है और ये बच्चे नॉर्मल है. अक्सर हम ऐसा कर देते हैं, चाहे जानबूझ के करें चाहे अनजाने में करें. वी हैव टू बी वेरी मच कॉशियस एंड केयरफुल कि हमें कभी कोई इस तरह का डिफरेंशिएशन क्रिएट करने की नौबत नहीं आनी चाहिए और ना करनी चाहिए. इंट्रोड्यूसिंग कंपनसेटरी एजुकेशन, आप उनसे भी पूछिए, उनसे भी सवाल कीजिए. डायग्राम बनाए ब्लैक बोर्ड पे तो उनको बताइए. ऐसा नहीं कि आप ये सोचे कि चलिए सारे बच्चे तो देख ही रहे हैं, सारे बच्चे तो सुन ही रहे हैं. Most of the students are not able to hear your voice. Some of the students are not able to see properly what you are teaching on the blackboard and whiteboard. So there is need to you compensate with telling them, dictating them
giving them some extra time, acquiring and enhancing the knowledge how to teach the disabled children. You can also, I think this is the best platform if you are having such kind of courses, seminars, conferences, and if you are attending. And moreover, you can also raise the qualification through various diplomas and degrees, online, offline, and distance mode, specifically for the inclusive education. Psychological empowerment of the different children, differently or disabled children, because the psychological empowerment of such kind of children are very important. And I think, in my own experience, that's half work done if you have psychologically empowered. Special care and attention is to be taken by the sports teacher. Most of the sports teachers, they don't allow them to be part of their sports activities because they are disabled. No matter, they can contribute, they can do some or other activities. जैसे कि हमने अक्सर ये मैं बात कोट करता हूँ अपनी क्लास में कि अगर कोई बच्चा ऑर्थोपेडिकली चैलेंज है, वो दौड़ नहीं सकता है लेकिन वो बैटिंग कर सकता है, रन ले नहीं सकता है लेकिन रनर लिया जा सकता है। हम नॉर्मल बैट्समैन जब घायल हो जाते हैं तो उनको बैट्समैन देते हैं। तो इसमें स्पोर्ट टीचर के लिए स्पेशली मैं ये कहूंगा कि दे मस्ट टेक स्पेशल अरेंजमेंट फॉर दी सिस्टम की तरफ से उनको अलग से टाइम दिया गया, अलग से टाइम दिया जाता है। एग्जाम में उनको टाइम दिया जाता है, राइटर्स दिए जाते हैं, सबटाइटर दिया जाता है कि वो अपनी कॉपी को लिखे और लिखवाएं। बट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज एंड लैक ऑफ अवेयरनेस, वी डोंट प्रोवाइड देम सो। Collaborating with the medical and psychological panels, social works, parents, and special faculty. Sometimes, if you came to know that a child is having some kind of or other kind of severe disability, if you have facility, a medical facility or psychological panels, you can refer to them. Or if you are not having such kind of facility, at least you can inform to the parents so that they can contact and they can treat give disabled person. Parental guidance and counseling. Most of the social organizations and NGOs do counseling for the disabled children, but they never concern to their parents, those who are having the disabled children. There is need to counsel and provide bring the awareness among the parents about their disabled children. और शायद उससे बहुत सारे प्रॉब्लम हल हो जाएंगे। Construction of achievement test and diagnostic tool. There is specific. There are so many specific. I can say that achievement tools are there, tests are there, scales are there, through which we can assess about their performance, specifically for disabled children. Being a faculty member, being a researcher, we can construct, we can develop the new tools that can assess and evaluate the achievement of the disabled children. Adaptation in evaluation of children with special needs. And the last but not the least, celebration of Disability Day in our educational institution, which is 3rd December of every year. And if we do so, I think that will pay a lot and that will pave the way as far as the awareness of the society about the disabled population, about their challenges, about their problems are concerned. My dear friends, in spite of the various interruptions by the network, by the disconnectivity, you are with me and you hear my words patiently. Now I would like to, and this is now your turn for your suggestions and your questions that will also welcome here, and I'm welcoming you a lot. Thank you very much for your presence hearing. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर, Thank you, sir. थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर Thank कुछ you, क्या sir. कह सकते हैं? Very informative session, sir. थैंक यू सो मच सर, Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.
मुस्कुरा के थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत सर कुछ जिज्ञासा थी। थैंक यू सर। आफ्ताब सर। थैंक यू सर। जिज्ञासा शांत करिए भाई अपनी। दीपक सर कुछ कहने वाले हैं लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे हैं।